Back on the Nation at 5, ladies and gentlemen, with the Bihar terror plot. Now, we have to tell you there are two separate modules that have been unearthed, and it's startling developments. One has direct links with the SIMI and PFI. It's a 3-member module that's been busted, and they have allegedly spent nearly 90 lakh rupees so far in propaganda, training, and other aspects. They still have nearly about 80 odd lakhs in their accounts. Where did they get this money from is one big question. They are currently being questioned. This is the group of Jalaluddin, Athar and Arman. Athar is somebody who's an older person he's an old SIMI hand. So the erstwhile band outfit SIMI, and now he's directly got connections with the PFI and the SDPI. On the other hand is this one individual whose name is Tahir alias Maghroob, who has been associated with a WhatsApp group that has the presence of Bangladeshi, Pakistani and also Yemeni nationals, nearly 180 of them, and who was working on a Ghazwat-ul-Hind agenda. So the PFI SDPI group was working on an Islamic State by 2047 agenda. That's what the cops allege. And this man, Maghroob, was working on a Ghazwat-ul-Hind agenda, and he was planning for and championing direct action on 2023 itself. Direct jihad is what has come out in his WhatsApp chat. So two separate investigations and two separate modules that have been busted, but the common agenda of terror, radicalism, and of course pan-Islamism. That comes to the fore. Now the Enforcement Directorate, top sleuths, NIA, RAW, lot of them, RNAW, all of them have now descended into Patna to investigate these details and to see how many people are involved in this entire network as far as two terror modules are concerned. Now at this point, we have Saurabh joining us live and Arunima with me here in the newsroom. Saurabh, first to you. There was interrogation happening as far as the PFI module is concerned. Two individuals have been jointly questioned. What is the information that they have divulged so far? Let's talk about the PFI SDPI Islamic State by 2047 agenda. See, Anand, on the first day when Jalaluddin, who was a sub-inspector in Jharkhand police, he was the ex-sub-inspector there, he was arrested along with Athar Parvez. Now, Athar Parvez is a ex-SIMI member, and he has accepted that he used to aid all his colleagues who were there in the jail and those who were in SIMI earlier. He used to give bail and become bailer of them, and also provide legal aid to those convicts. Now, after the police investigation, the police conducted a PC, and then they revealed that there were transactions of more than 83 lakhs and it was 40 lakhs was received by Pakistan, and 13 lakhs from Turkey, and 30 lakhs from Bangladesh. So these figures were given by the police that these kinds of transaction took place in Athar Parvez's and others' account. So when asked that whether ED will rope in this matter, the Patna police gave us the information that ED will certainly rope in this matter. But so far we haven't heard that it is conducting any investigation. Yesterday, central agencies from Delhi came to Patna and had a meeting with the ATS chief in Patna for around 90 minutes, and they had gathered all the information, taken all the information from them. And also today also we are learning that there is a meeting going on. So the investigation is on, and just an hour ago, Arman Malik and Athar Parvez, who were there in Mahila Thana, they were getting interrogated, but because their remand period was over at 5 p.m, they have been taken to court for taking more time, as what the police claims. They are demanding more time for interrogation. Yes. Well, Saurabh, I'm just going to request you to check. I'm going to request you to check whether or not further remand and further custody has been granted. They must be in court as we speak right now. Let me just take this to Arunima. Saurabh is telling us that they have nearly 83 lakh rupees has been found in their account right now, and the investigating authorities are saying nearly 40 lakhs came from Pakistan, 30 lakhs came from Turkey, and about 13 lakhs has come from Bangladesh or thereabouts. So these three nations, how is so much of money coming into this outfit and this lot if they are as nondescript and inconsequential as the PFI locally has been trying to portray these people? Well, not the first time, because if you remember the
the Citizenship Amendment Act protest that was going on. There were protests in Delhi, of course, all of us know about that. There were protests in Uttar Pradesh as well. And even then, Enforcement Directorate had registered a case for precisely this reason, that there is money coming into their account. We don't know where that money is coming from. There is no proper accounting of where that money is being utilized. So ED suspected money laundering, and that's why that case is still under investigation. So it isn't the first time that monetary trails leading to PFI members are in the crosshairs of agency. In this case also, SDPI, the student wing of PFI, is what is being projected, that they were trying to help students. They were wanting to help students. But remember what the agencies are saying, that in the garb of helping out students, essentially what was happening was imparting them martial art training, sword handling training, and they were being made to sign a pledge that when you go back to your village or go back to your locality, each one of you will train 10 people. Well, I just have to tell our viewers, the visuals that you're seeing on your screen right now is not a PFI member. He's the other individual. His name is Maghroob alias Tahir. What we were talking about right now are the other three. Jalaluddin, who's a former sub-inspector, now he's involved in this. And then you have Athar, who's the person with a bald head and a white beard. He's the member who's a former, he's an old Simi hand, we are given to understand. And you have a third, that is Arman Malik. So this group has been operating, and they are PFI members, and their groups has been operating. So what is the NIA saying? Are they looking at PFI and its operations as a whole? Because in every aspect of social unrest, since the CAA protests, the PFI has been involved, and infamously. See, officially speaking, NIA is not part of this case. They have yet not received any notification from the government of Bihar making a request to MHA to hand over this case to NIA. All that Bihar police has said is give it to Enforcement Directorate because of the financial transactions which have been revealed so far. However, informally, NIA officials are part of the investigation that is happening because there are a lot of similarities in what they are probing so far and what this case has thrown up. Having said that, as far as social unrest throughout the country is concerned, it is absolutely spot on that PFI's name has come up every time there has been a radicalization module that has been busted or a law and order situation that has been created. What the Ministry of Home Affairs, however, has said is that we will allow the agencies and the police force to deal with this locally, because the moment we ban them, a lot of people have been asking, why are you not banning the Popular Front of India? This is what MHA says. The moment you ban them, all that happens is you push them underground and they come up in a different avatar. From Simi, they went to Indian Mujahideen, to PFI. Tomorrow they'll come up with another avatar. The task is to challenge this planning and this conspiracy, not to just ensure that the organization goes underground. Correct, because that's what happens with Simi. If Athar is an old Simi hand, he's come through. All the founder members of the PFI are all, and it's listed, they're all erstwhile members of Simi. Arima, we've got news coming through, and I'm going to go across to Saurabh for this, that there is also a Jharkhand connection to what is happening in Bihar. Now, one of the arrested persons, identified as Mohammad Jalaluddin, is a retired police sub-inspector of Jharkhand, and while the second has been identified as Mohammad Athar Parvez, a former member of Simi. Now, Parvez's younger brother, Manzar Parvez, has landed in jail in connection with multiple blast cases. Athar is said to be the main bailer for many terror accused 2001, 2003 and 2013 blast cases. Athar raised funds over 80 lakhs from within India and also from Pakistan, Turkey and Bangladesh. Investigation has revealed that foreign money was used to release Simi activists and terrorists from judicial custody. We're getting this update. We'll come back to this story in just a bit. For the moment, cutting across to Rising Chhattisgarh with Chief Minister Bhupesh Baghel speaking. विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, चंदूलाल चंद्राकर जी, ये बड़े नेता होते थे। हम लोग जिंदाबाद नारा लगाते, झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई, तो फिर दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, फिर जोगी जी के मंत्रिमंडल में रहे, फिर विपक्ष में आए तो उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली, फिर पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया। तो वो जिम्मेदारी अब पार्टी कहते हैं कि भाई इन प्रदेशों में। भूपेश जी बघेल जी, फिर इतना आसान भी नहीं है, जितना आसानी से आपने सब समझा दिया कि पार्टी ने ये कर दिया, लेकिन आप सब तरफ से सबको चित करके एकदम सामने खड़े हो जाते दिखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुख्य धारा में बने रहिए और काम करते रहिए। मूल्यांकन ऊपर नेता लोग करते ही हैं और अवसर मिलता ही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वो अवसर मिला और आज जिस मुकाम में पहुंचा हूं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के नेताओं का, सोनिया जी का, राहुल जी का बड़ा योगदान रहा है। यदि वो अवसर नहीं देते तो मैं यहाँ थोड़ी पहुँचता। राइट, अवसर आपको मिला और आपने कहा कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ूंगा और गढ़ भी रहे।
छत्तीसगढ़ मॉडल का भी जिक्र आप छत्तीसगढ़ में भी करते हैं, अब तो देश भर में भी कई जगहों पर होती है। क्या आपका छत्तीसगढ़ का मॉडल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, परिवार में, शहर में, समाज में, प्रदेश में, देश के सामने। उन समस्याओं को आप किस प्रकार से आप उसका निराकरण करते हैं। पूरे देश में जो मवेशी है समस्या बन गई थी, गाय एक समस्या के रूप में आई, मॉब लिंचिंग तक हुआ, लोगों की हत्याएं तक हुई, राइट। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में इसका समाधान नहीं ढूंढा गया। उस समस्या का समाधान कहीं ढूंढा गया तो छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया। कॉपी नहीं किया आपने कहीं से? कॉपी क्या, इसका अनुसरण सब प्रदेश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, सब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आपने सवाल तो ठीक किया, क्या आपका एक मॉडल है छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, लेकिन ये गुजरात विकास मॉडल से किस तरह से फर्क है? गुजरात का भी एक विकास का मॉडल है उनका, तो छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है गुजरात के विकास के मॉडल, क्योंकि आप गुजरात में भी दिखाई देंगे, हिमाचल में भी दिखाई देंगे। जी, गुजरात मॉडल 2014 में बहुत इसकी तेजी से पूरे देश भर में प्रचार किया गया, गुजरात मॉडल, और सब लोग गुजरात मॉडल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा दी। 8 साल बीत गए साहब, लेकिन गुजरात मॉडल टार्च लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलता। लेकिन प्रदेश तो जीतते हैं वो। देखिए, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और मांगते किसी और आधार पे वोट मांगते हैं। लोग कहते हैं कि आप स्वीकार नहीं करते हैं। गुजरात मॉडल के बारे में कहें तो हमने अभी तक के 8 सालों में क्या देखा? एक नोटबंदी देखा, दूसरा जीएसटी देखा, तीसरा लॉकडाउन देखा, चौथा सड़कों पे किसानों को संघर्ष करते और प्राण गंवाते हुए देखा, और अब जो देख रहे हैं अग्निवीर के रूप में देख रहे हैं, ठेका में सैनिक। ये संभवतः यही गुजरात मॉडल हो। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूं, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कर सकता हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है, और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम। आज हम चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, किसानों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। हम ये यदि कहते हैं कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना करते हैं तो मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो जो गौ पालक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। यदि लघु वनोपज संग्रहण की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की बात करें तो वनवासियों, आदिवासियों और वहां जो रहने वाले लोग हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है, जो लोगों को अधिकार संपन्न के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम कर रही है। दूसरे तरफ गुजरात मॉडल या भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ये है कि लोगों के जेब से कैसे पैसा निकालना है, चाहे डीजल के भाव बढ़ा के हो, चाहे पेट्रोल के भाव बढ़ा के हो, चाहे रसोई गैस की कीमत बढ़ा के हो, चाहे खाद के शार्टेज या उसकी कीमत बढ़ा के हो, चाहे उसके भावनात्मक शोषण करने की बात हो। ये गुजरात का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। मैं इस सवाल पे फिर से लौटूंगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछा चाहता, जब चुनाव हुए पिछले, आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की 2 जगह और बनी, लेकिन अब एक जगह है, दिखती है, राजस्थान। आप बाकी जगह से आके कैसे निकल गए? मैंने यही सवाल पूछा था कि बाकी जगह भी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के ही हैं वो भी, लेकिन आपकी चर्चा ज्यादा है, जहां चुनाव होता है आपको स्टार कैंपेन। तो नाउ आप कांग्रेस में एज ए पार्टी में आपका कद, रुतबा, भाई साहब चमक, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं खुद? क्यों आपको स्वीकार करने में क्या, जब आप इतनी चीजें योजना कर रहे हैं? इस बात को तो पार्टी बता पाएगी, या वहां के जो प्रदेश के नेता है वो बता पाएंगे, या कार्यकर्ता बता पाएंगे। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कैसे अपने आप का आकलन कर सकता हूं? एक बड़ा कारण इसका ये भी है कि बोलते हैं बीजेपी के हथियार ही आप उस पर इस्तेमाल कर देते हैं। जी, बीजेपी का हथियार ही आप इस्तेमाल करते हैं। राम वनगमन की बात कर लें, या कश्मीर फाइल उठा तो आपने कह दिया कि चलो कश्मीर फाइल दिखाते हैं सभी को, या भेंट मुलाकात आमतौर पर विपक्ष पूरे प्रदेश में घूमता है, उसकी जगह आप ही पूरे प्रदेश में इस वक्त दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
देखिए, इनके पास तो कोई विचार है ही नहीं। तो कॉपी करने का सवाल नहीं उठता। यदि ग्राम स्वराज्य की बात करें तो